Student, you're watching my YouTube channel Breathing Physics, and I am your physics professor PD sir. So till now we have covered 10 parts of vector series. In previous part we have saw how to make components of vector or how to resolve the given vector. Okay, so this is 11th part, and in this lecture we are going to see how to represent any vector, any given vector इनटू यूनिट वेक्टर नोटेशन यानी कि किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Questions will not be asked directly on this concept, but for many problems in physics you need to have this concept along with you. Before that I want to announce some name because these persons have given answer of previous quiz, and they are Shruti Telnade, Aniruddha Dalvi, Swapnil Kupte, Sanika Kadam and Sanjay Jadhav. Okay, so let's come. We will learn now how to notify or how to convert given vector into unit vector notation. Okay, so there are basically 4 cases. Any vector, किसी भी वेक्टर को हम एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, ये इन्हीं 4 ही क्वाड्रेंट में रख सकते हैं. तो हम बाय केसेस वाइज जाएंगे कि अगर पहले क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर है तो उसे हम यूनिट वेक्टर नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं. अगर आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर नोटेशन क्या यूज करेंगे. सिमिलरली फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो लेट्स कम. And this is our first case. In this case we have take vector a bar. हमने a bar को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है. Let's say it is making an angle theta. It is making an angle theta with a x-axis or horizontal axis. So we can modify this vector as, this is our y-axis, this is our x-axis. Okay, so this is our a bar and this is angle theta. So you know that in a previous lecture the vector near to the theta we have took it as a cos theta. That's why it will become a cos theta, a cos theta, and this vector will become a sin theta, a cos theta, a sin theta. This is nothing but a x. We know that x component of vector a, and similarly this part, only this part is nothing but a y component of a bar. This is x component, this is x component, and this is y component, this much. Okay, so you know that I have told you in a previous lecture as well, we can represent this a bar in terms of ax and ay. Okay, and it's like we can represent a bar as ax bar plus a y bar using triangle law. If this is ax bar, this is ay bar, then a bar can be ax bar plus ay bar, and this is ax bar. So a bar can be represented as ax bar plus ay bar. Ax is nothing but the x component of this vector, and ay is nothing but y component of this vector. Okay, so ax is nothing but here a cos theta, and ay is nothing but a sin theta. This is clear. X component of vector a has magnitude a cos theta, and y component of vector a has a magnitude of a sin theta. So how to represent then ax bar? So you know that ax bar can be represented as ax into I cap, because ax vector is we are measuring it along x axis, and along x axis we have unit vector I cap. That's why I cap. Similarly ay bar will be ay into j cap. So if I use this ax bar ay bar value and this ax and ay values, which are the magnitude, ax bar is a vector and ax is a magnitude of ax bar. If I put these all values here, then a bar can be become as ax I cap plus ay j cap. Okay, am I right? Okay, so a bar can be modified as ax I cap has a value of ax has a value of a cos theta, so that a cos theta I cap plus ay has a value of a sin theta, a sin theta j cap. Okay, I hope till this stage you have learned how to represent a bar into ax bar plus ay bar. Okay,
right now just note down these things. After that I will teach you how to convert this vector into unit vector notation. इस वेक्टर को हम कैसे यूनिट वेक्टर में मॉडिफाई करेंगे वो हम इसके बाद देखेंगे. इनिशियली जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स. ओके. Okay, now we got a bar is a cos theta I cap plus a sin theta j cap, which gives us magnitude of a bar is equal to under root a cos theta whole square. We always only took magnitude of given vector, so that a cos theta square plus similarly a sin theta whole square. Okay, so that means a square will come out as a common, and remaining part is cos square theta plus sin square theta. That's it. And you know that according to mathematical identity, cos square theta plus sin square theta has value of 1. So only a square, which will gives us a. So magnitude of a bar is equal to a. Okay. So now we got the vector. Here we have vector a bar as well as we have its magnitude. अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है तो हम उसका यूनिट वेक्टर बता सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल इज वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. दैट्स व्हाई यूनिट वेक्टर नोटेशन ऑफ दिस वेक्टर ए बार, और यूनिट वेक्टर हम ए बार से दिखाते हैं ऐसे ए बार. तो यूनिट वेक्टर नोटेशन ऑफ ए बार is a cap is equal to a bar to its magnitude. So a bar we have here a cos theta I cap plus a sin theta j cap divided by magnitude is a, which will ultimately gives us result of a get cancel is equal to cos theta I cap plus sin theta j cap, cos theta I cap plus sin theta j cap. So this is the unit vector notation of given vector a bar if it is placed in a first quadrant. अगर कोई भी वेक्टर ए बार आपको दिया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन ऐसा रहेगा cos theta I cap plus sin theta j cap. ओके, नोट इट डाउन. Okay, now let's learn if given vector is given in a second quadrant. अगर आपको वेक्टर जो दिया है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस टाइम पे आप उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन किस तरह से देंगे. So here we have vector a bar which is placed in a second quadrant making angle of theta, and you know that the vector along with the theta is nothing but cos theta. The component of vector is a cos theta. That's why it will become a cos theta, and this component will become a sin theta. a cos theta बन गया, a sin theta बन गया. अब ये जो x component है a बार का, इसे हम बोलते हैं x बार. ओके, एंड सिमिलरली दिस component और दिस वेक्टर इज नथिंग बट a y बार. दैट्स इट. तो हम जो हमारा a बार दिया है वो x बार एंड a y बार में भी लिख सकते हैं. ओके, सो a बार इज इक्वल टू a x bar plus a y bar, but we have to first of all find what will be the value of ax bar. So यहाँ पे ax bar जो रहेगा माइनस ax into I cap रहेगा. माइनस x इसलिए ax जो रहेगा ना वो कंपोनेंट रहेगा जो कि a वेक्टर का है along x एक्सिस, और यहाँ पे जो x एक्सिस है वो नेगेटिव है. दैट्स व्हाई माइनस ax I cap and a y bar will be as it is a y into j cap. अब यहाँ पे j पॉजिटिव लिया है क्योंकि along पॉजिटिव y एक्सिस है इसलिए. Therefore and ax has value of, you know that ax is equal to a cos theta and a y is equal to a sin theta. Okay, so that's why it become a bar is equal to minus a cos theta I cap plus a sin theta j cap. Okay, this is our vector a bar.
Now its magnitude of a bar will be equal to minus a cos theta whole square plus a sin theta whole square, which will give us ultimate result of a square into cos square theta plus sin square theta, because square of minus will be plus. So magnitude of a bar is equal to a. So here again we have vector a bar as well as magnitude which is a in a second quadrant. If given vector is placed in a second quadrant, so now unit vector notation of a bar is a cap is equal to vector to its magnitude. So here we have vector minus a cos theta I cap plus a sin theta j cap divided by a. Okay, so it will give us, this will give us result of, I will write it here as minus cos theta I cap plus sin theta j cap. This is a cap. This is our final result. अगर कोई भी वेक्टर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है और उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन पूछा है तो उसका आंसर आता है माइनस cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप. फर्स्ट क्वाड्रेंट में था cos थीटा प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन आया था cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप. यहां पे बस cos का साइन चेंज हुआ है जो कि नेगेटिव है माइनस cos थीटा i कैप. ओके, नोट इट डाउन. ओके, नाउ इफ गिवन वेक्टर इज गिवन इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि आपका जो वेक्टर दिया है आपको अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट्स कम, वी हैव हियर a bar which is in third quadrant making angle theta. So along with theta we have a cos theta definitely, and this component will be definitely a sin theta. This is a sin theta. Okay, that means this much has value of a y bar and this vector has value of a x bar. अगर यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे आप तो दो जो क्वाड्रेंट हमने सिलेक्ट किया है उसके जो भी कंपोनेंट है x एक्सिस एंड y एक्सिस both are negative now. This is minus x axis and this is minus y axis, and you know that a bar can be represented as ax bar plus ay bar, as well as ax bar is given as ax I cap and ay bar is given as ay j cap. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा because both are in a negative axis. That's why minus. Here minus ay j cap and here minus ax I cap. So we know that ax has value of a cos theta. So ax bar is become minus sin जो यहाँ पे है और ax का वैल्यू a cos theta I cap and ay bar will be minus sin यहाँ पे और ay का वैल्यू a sin theta j cap. That's it. So a bar is equal to minus a cos theta I cap minus a sin theta j cap. ये जो x बार और ay बार का वैल्यू था वो बस यहाँ पे पुट कर दिया. यहाँ पे एक्चुअली प्लस साइन आता है लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया. तो ये हमें मिल गया a बार. अगर आपका वेक्टर कोई भी वेक्टर है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका वेक्टर नोटेशन तो माइनस ए cos थीटा i कैप माइनस ए sin थीटा j कैप होगा. अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे ना तो सिमिलरली a ही आ जाता है बिकॉज माइनस ए cos थीटा का स्क्वायर होगा और माइनस ए sin थीटा का स्क्वायर होगा तो उसका एडिशन फिर से a स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद a हो जाएगा वो. सो अगर इसका यूनिट वेक्टर नोटेशन लेंगे हम, यूनिट वेक्टर नोटेशन ऑफ a बार इज, तो इस तरह आएगा. यहाँ पे आप a cap is equal to a bar divided by its magnitude. So a cap is equal to वेक्टर तो है minus a cos theta i cap minus a cos theta i cap minus a sin theta j cap divided by its magnitude is a. So अगर a इसे डिवाइड करेंगे तो a चला जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पे प्लस साइन नहीं है एक्चुअली, बस नहीं है माइनस है यहाँ पे. So it will become, eventually it become minus cos theta I cap minus sin theta
j cap. This is unit vector notation of given vector in थर्ड क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cos थीटा भी पॉजिटिव था, sin थीटा भी पॉजिटिव था. सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव हो गए. ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट का नोटेशन ये है माइनस cos थीटा i कैप माइनस sin थीटा j कैप. नोट इट डाउन. अभी देखो लास्ट का जो केस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि अगर आपको ए बार या फिर कोई भी वेक्टर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है तो उसको आप यूनिट वेक्टर नोटेशन में किस तरह लाएंगे. तो cos थीटा के साथ का जो रहेगा वो a cos थीटा रहेगा, x कंपोनेंट. ओके, एंड जो दूसरा वाला रहेगा वो रहेगा a sin थीटा कंपोनेंट. ओके, दैट मींस दिस वेक्टर हैज वैल्यू ऑफ a y बार एंड दिस वेक्टर इज नथिंग बट a x बार. ए एक्स बार और ए वाई बार ये दोनों भी ए बार के कंपोनेंट्स है, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है कि किस तरह हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. तो सिमिलरली ए बार कैन बी रिटन एज ए एक्स बार प्लस ए वाई बार, बट हियर ए एक्स बार इज इक्वल टू नाउ ए एक्स आई कैप बट पॉजिटिव एक्स आई कैप एंड ए वाई बार एज वैल्यू ऑफ माइनस ए वाई j cap, because as y component of a bar is we have drawn along y axis which is negative, and along negative y axis we have unit vector minus j cap. So a bar is equal to a x I cap minus a y j cap, but a x has a value of, you know that, a cos theta. So a cos theta I cap minus a y is value of a sin theta j cap. So this is our vector a bar in a fourth quadrant. Now similarly it has also magnitude of a. You can calculate it. A cos theta square plus a sin theta square, eventually it will become a square into sin square theta plus cos square theta, and mathematical identity 1 for sin square plus cos square, and it will comes out as only a out of that square root. So unit vector notation of a bar is, when a bar is in a fourth quadrant, is a cap is equal to vector to its magnitude. So it will give us result of a cos theta I cap minus a sin theta j cap divided by magnitude a. So a cancel, it will become cos theta I cap minus sin theta j cap. This is unit vector notation of given vector when it is placed in a फोर्थ क्वाड्रेंट. कोई भी वेक्टर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है तो उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन ये रहेगा. अगर आप सब बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा एज वेल एज sin थीटा दोनों पॉजिटिव थे, यानी कि x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट बोथ वेयर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में हम जब गए तो cos थीटा हमारा नेगेटिव बन गया, इनिशियली x कंपोनेंट नेगेटिव बन गया, उसके बाद दोनों नेगेटिव बन गए, और उसके बाद जो चौथी केस थी कि दूसरा वाला sin थीटा नेगेटिव बन गया. अगर आपको आप ये सीक्वेंस के साथ ध्यान में रखेंगे ना तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहता है x और y बोथ आर द पॉजिटिव, सो देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव कंपोनेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहेगा, दैट्स व्हाई cos थीटा विल बी नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, दैट्स व्हाई cos थीटा एज वेल एज sin थीटा नेगेटिव, and in a fourth quadrant y axis is negative, that's why sin theta is negative, because sin theta always comes along y axis. That's why y is negative. If given axis is negative, then it definitely j bar will become minus j bar. That's why minus sin theta. Okay, it is not difficult to understand it. It's a very easy method. And for physics, in second part and first part as well, as vector is very important. So these vector notations are also important. In previous question paper, we have some question regarding vector notation as well. We will see it in next part as well. So just note it down. After that we will have quiz. So okay, this is our today's quiz, and the question is like, a car is moving in a direction r bar as minus 4 I cap, here we have sign minus 4 I cap plus 3 j cap with a speed of 10 meter per second. Write the velocity vector of car in a unit vector notation. Okay, so velocity vector notation you have to calculate. Don't go directly, don't use any trick. First of all, note down the process. I have taught you that first quadrant, second quadrant, third and fourth. So initially just try to analyze this vector will be in which quadrant. According to go
according to go with that process, and finally first of all find out velocity vector, because we have given as a car is moving in a direction. This is the direction they have given us. So initially find out velocity vector. Once you got the velocity vector, then find its magnitude, and if you have vector as well as its magnitude, then definitely you can calculate unit vector notation of that particular vector. It's not difficult. So this is our 11th part. We have 3 to 4 parts remain to cover, and after that I will tell you how which kind of questions comes on vector part, as well as some tricks for vector, and we will analysis JEE questions as well as NEET questions in upcoming part. Okay, so find out the answer and comment it in comment box. If you have any doubt, you can comment in comment box as well. I hope this lecture was beneficial for you, and please like, comment, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for listening me. Take care, be safe.